Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning science of class 4. This is Edurise series by Amit Publishing House and here is a book Innovators Science. Today we are going to start with chapter number 3, clothing, our basic need. So in this chapter we are going to learn about different types of clothes. So let's move on to intended learning outcomes. So here we are going to learn about fibers and their types, taking care of clothes and professions. Let's move on to kick off. So like the need of food and shelter, the need of clothing is equally important. जैसे कि खाना और रहना ये दोनों important है, वैसे ही कपड़ों की ज़रूरत भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा important है. The importance of clothes was felt even by early humans. So जो अर्ली ह्यूमन्स रहते थे उनको भी कपड़ों की ज़रूरत पड़ी थी, उन्होंने भी इसकी इम्पोर्टेंस को समझा. They used leaves of trees and the skins of animals to protect their bodies. वो क्या करते थे? पत्तों को यूज़ करते थे, लीव्स जो थे ट्रीज के उनको यूज़ करते थे, एनिमल के स्किन यूज़ करते थे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए. किससे? हीट से और कोल्ड से. Let us read about it. तो चलिए इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं. So before that, let's move on to exercise Funtopia. Here you have to arrange the letters to form a meaningful word, then match with the seasons in which they are used. So यहाँ पे कुछ seasons की picture दी गई है. I'm going to write down the words and it's your homework that you have to match these words with the pictures. So here the first is autumn, then spring, then winter, then summer, then monsoon, then woolen and then cotton. So you have to match these with the given pictures. Now clothes are our basic need. ये हमारी बहुत ही important need है. Clothes protect us from the heat, dust, cold, rain and insect bites. Clothes क्या करते हैं? हमें heat से, dust से, cold से, rain से और insect bite से बचाते हैं. The clothes we wear at home are called casual or informal clothes. वो कपड़े जो हम घर पे पहनते हैं उन्हें हम casual या फिर informal clothes कहते हैं. The clothes we wear also change according to the season. जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो season के according change होते हैं. People living in different parts of the country wear different types of clothes at different places. अब हमारी country में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्लोथ्स को पहनते हैं अपने अपने प्लेस के अकॉर्डिंग. वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, हम विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. इन समर वी वियर कॉटन क्लोथ्स, समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. और रेनी सीजन में हम जो है रेन कोट्स को पहनते हैं ताकि हम अपने आप को रेन से बचा सकें. वुलन क्लोथ्स, रेन कोट, कॉटन क्लोथ्स. नेक्स्ट कम्स फाइबर्स एंड देयर टाइप्स. So clothes are made from long, thin strands or threads of material called fibers. ये जो कपड़े कैसे बनते हैं? ये लंबे लंबे पतले पतले strands जो होते हैं, धागे होते हैं, उससे बनते हैं. इन्हें हम fibers कहते हैं. These fibers are put together by various processes to make broad spreads of clothes or fabric. अब ये जो फाइबर है इसको क्या करते हैं? एक साथ जो है रखा जाता है अलग अलग प्रोसेस में और इनको जो है अरेंज करके क्लोथ्स या फिर फाइबर बनाया जाता है. फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप. ये दो तरीके के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. पहले हम पढ़ेंगे अबाउट नेचुरल फाइबर्स. सो द फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. ऐसा फाइबर जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स देते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं. जैसे कि कॉटन, जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर प्लांट फाइबर. ये कुछ प्लांट फाइबर्स हैं. ऑन द अदर हैंड वुल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स. ये एनिमल फाइबर्स हैं. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉटन, वुल एंड सिल्क. लेट्स मूव ऑन टू जस्ट अ हेड्स अप. सो कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट का जो फ्लावर है वहाँ से हमें ये मिलता है. एंड लिनन इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लेयर प्लांट. सो लिनन जो है हमें जो फ्लेयर प्लांट है उसके स्टेम से मिलता है. नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स. सो सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स. ये मैन मेड फाइबर्स हैं
and these are not found in nature. ये nature में हमें नहीं मिलते हैं, but are synthesized by man. इसे man produce करता है. Nylon, rayon, polyester, etc. ये सारे हैं synthetic fiber. These are useful due to their special characteristics. ये यूजफुल है क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सम आर वाटर प्रूफ, सम आर रिंकल फ्री एंड सम आर स्ट्रेचेबल. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कुछ कपड़े तो वाटर प्रूफ निकलते हैं जो पानी से नहीं भीगते, कुछ जो है रिंकल फ्री है जिसमें जो है रिंकल्स नहीं आते हैं, और कुछ जो है स्ट्रेचेबल है जो स्ट्रेच कर सकते हैं. सो पिक्चर देख सकते हैं नायलॉन, रेयन और पॉलिएस्टर की. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू क्लोथ्स एंड प्रोफेशंस. सो पीपल वेयर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू देयर जॉब्स. लोग जो अपनी जॉब के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग पहनते हैं. अ सोल्जर वियर्स अ मिलिट्री यूनिफॉर्म. सोल्जर मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनता है. डॉक्टर्स जो है, नर्सेज जो है, ये क्या करते हैं? वाइट कोट्स पहनते हैं. डीप सी डाइवर जो है वो वाटर प्रूफ क्लोथ्स पहनता है. एंड स्टूडेंट्स क्या वेयर करते हैं? ये स्कूल यूनिफॉर्म्स वेयर करते हैं. सो आप देख सकते हैं पिक्चर्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू twisting time. So here you have to fill in the blanks. First one is we wear dash clothes in winter season. So we wear woolen clothes in winter season. Cotton and jute are dash fibers. These are natural fibers. Third, dash and dash are animal fibers. So wool and silk are animal fibers. Next, dash and dash are synthetic fibers. So nylon and polyester are synthetic fibers. Next, let's move on to taking care of clothes. Clothes का हम ध्यान कैसे रख सकते हैं? So clothes should be washed properly. इन्हें ध्यान से हम अच्छे से वॉश करें. Woolen and silk clothes are very delicate. ये जो कपड़े हैं ये काफी ज्यादा delicate होते हैं. So they should either be dry cleaned or washed with a mild detergent. या तो इन्हें हम ड्राई क्लीन करें या फिर इसे माइल्ड डिटर्जेंट से वॉश करें. कॉटन क्लोथ्स शुड बी आयरन बिफोर वियरिंग. पहनने से पहले कॉटन क्लोथ्स को आयरन करें. मोथ बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स शुड बी केप्ट इन वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स. मोथ बॉल्स जो होते हैं या फिर जो नीम के पत्ते, जो सूखे हुए नीम के पत्ते, उन्हें हमें वुलन और सिल्क क्लोथ्स में रखना चाहिए ताकि इंसेक्ट्स को उनसे दूर रख सके. कौन कौन से इंसेक्ट्स इन पे हमला कर सकते हैं इन क्लोथ्स पे? सिल्वर फिश एंड मोथ्स. तो ये इंसेक्ट्स दूर हो जाएंगे अगर हम इसको हम अपनाएंगे. वी शुड मेंड क्लोथ्स दैट आर टोर्न और हैव ब्रोकन बटन्स बिफोर वियरिंग देम. ऐसे कपड़े जो फट रहे हैं या जिनके बटन वगैरह टूट गए उनको पहले ठीक करें फिर पहनें. Let's move on to make teaching fun. So what you have to do, you have to go to the nearby shop with your elders. अपने elders के साथ पास के किसी शॉप पे जाएं and find out what are naphthalene balls. ये ढूंढने के naphthalene balls क्या होते हैं and for what purpose they are used for, और ये किस काम आते हैं. So this you have to do yourself. Now let's quickly move on to word said. So natural fibers are fibers that are obtained from either plants or animals. Synthetic fibers are fibers that are made by man. Let's move on to quick review. So clothes protect us from heat, dust, cold, rain and insect bites. Fibers are of two types, natural fibers and synthetic fibers. Wool and silk are animal fibers. Synthetic fibers are man-made fibers. Cotton clothes should be ironed before wearing. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's quickly move on to book exercise, which is put on your thinking cap. So here a exercise is darken the correct option in OMR sheet. So first one is clothes protect us from rain, dust, tsunami, both A and B. So both A and B is the correct answer. Second, which of the following clothes absorb sweat and keeps our body cool? Nylon, cotton, polyester, rayon. Cotton is the correct answer. Third one, which of these clothes are very delicate? Cotton, nylon, silk or polyester? Silk is the correct answer. And the fourth one is dash fibers are man-made fibers. Natural, synthetic, cotton, none of these. Synthetic is the correct answer. So these answers you have to mark. Now let's quickly move on to the next exercise, which is B exercise, fill in the blanks with correct words from the
box. First one is we wear clothes according to different seasons. Second, fibers are of two types. Third, we wear raincoat to protect ourselves from rain. Fourth one, a soldier wears military uniform. And the fifth one is we should mend our clothes that are torn. Next, let's move on to C exercise, which is take the correct statements and cross the wrong ones. First one, clothes are made from fibers. Yes, true. Second, clothes are our basic need. Yes, true. Third, rayon and polyester are plant fibers. False. Fourth, clothes should not be washed properly. This is also false. And the fifth one is we wear woolen clothes in winter. Yes, this is true. So, write down the answers. Now, let's quickly move on to D exercise, which is answer the following questions. First question is, how are clothes useful to us? So, clothes are useful to us because they help us in protecting our body from heat, cold, rain, etc. Next, second question, what are natural fibers? Give examples. So, natural fibers are the fibers that are produced from plants and animals, and the examples are cotton and silk. Next, third question, how are clothes related to profession? So, people wear clothes according to their profession, such as doctors wear the coat, soldiers wear the military uniform. So, the clothes are related to the profession like this. Now, fourth one, what are synthetic fibers? Give examples. So, synthetic fibers are man-made fibers, and these fibers are made by man. That's why they are called synthetic fibers, and the examples are nylon and polyester. Fifth one, how can we take care of our clothes? So, we can take care of our clothes by washing it regularly, ironing it before wearing it, keeping it safely with mothballs and dried neem leaves, and the clothes that are to be dry cleaned, those clothes should be dry cleaned, and like this we can protect our clothes. So, these are the answers. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.